Hello students, I am Rajeshri ma'am and you are watching English Guide for School Children. Here I am going to explain a poem today from the textbook of class 6 James English Reader. The name of the poem is A Child's Thought by Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson was a Scottish novelist, poet, essayist, travel writer. That means he was a great writer, and some of his novels are very popular among the children even today. So, the name of those two novels are Treasure Island and Kidnapped. And he also wrote many poems, and this is a poem for the children, and this is about a child's imagination, child's thought means here imagination. यहाँ पे थॉट का मतलब होता है इमेजिनेशन, मतलब कल्पना. एक छोटा सा बच्चा वो रात में बेड पे जब सोने जाता है वो क्या क्या कल्पना करता है या इमेजिन करता है, वही इस और उस इसमें दो पिक्चर दिए गए. देयर आर टू पिक्चर्स ऑफ द child's routine. One is of the night time when he goes to bed, and the second is when he wakes up in the morning. यहाँ पे दो तरह का चित्र दिया गया है. एक बच्चा जब सोने जाता है रात को, और एक जब वो सुबह सोकर उठता है. तो जब रात का जो तस्वीर है, द पिक्चर ऑफ his night is very beautiful. He gets lost in the world of fantasy or the fairy tales. This is a world which is very beautiful, full of beautiful things like castles, kings, and brave soldiers and all these things. But the daytime is absolutely mundane. That means which is harsh reality. There is nothing beautiful in it. तो वो रात में जब सोने जाता है तो एक सुंदर सा दुनिया में वो खो जाता है, जहाँ पे राजा है, परी है, ड्रैगन है. लेकिन सुबह जब वो उठता है तब वो एकदम नीरस हो जाता है. पूरा जो चारों तरफ का जो माहौल जो है वो एकदम ही साधारण होता है. उसमें कोई मज़ा नहीं है, कोई कल्पना नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. फर्स्ट आई एम रीडिंग आउट द पोएम एंड follow the pronunciation very carefully. If you want to learn English, how to pronounce English, then you should listen to the recitation very carefully. At 7 when I go to bed, I find such pictures in my head: castles with dragons prowling round, gardens where magic fruits are found, fairy ladies prisoned in a tower or lost in an enchanted bower, while gallant horsemen ride by streams that border all this land of dreams. I find so clearly in my head at 7 when I go to bed. At 7 when I wake again, the magic land I seek in vain. A chair stands where the castles frown, the carpet hides the garden round. No fairies streep across the floor, boats and not horsemen flank the door, and where the blue streams rippling ran is now a bath and water can. I seek the magic land in vain at 7 when I wake again. तो पहला जो है at 7 when I go to bed, this is the night time, evening time. 7 o'clock बच्चा क्यों सोने जा रहा है? तुम लोग सोच रहे हो कि ये तो बहुत जल्दी सो रहा है. ये दिस इज़ अ पोएम written 100 years ago. Robert Louis Stevenson was born in 1850 and died in 1894. This is more than 100 years. At that time there was no electricity and no TV and no telephones and all these things. So people used to people have to light their lamp in the night, so they did not
they would not wake up for a long अप टू लेट नाइट। उस समय लोग ज़्यादा देर तक नहीं सोते थे, जहाँ थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो बस वो लोग सोने चले जाते थे। सो द चाइल्ड गोज़ टू बेड at 7. I find such pictures in my head. Castles with dragons prowling round, gardens where magic fruits are found. He imagines about a world where there is a castle, big castle, with dragons. Dragons is a creature, imaginary creature, who used to emit fire from its mouth. And the child thinks about a castle. Castle is a fort with which is enclosed by a big wall, and which is protected from the enemies. And the child is in the castle where there are many dragons prowling round. They are walking very carefully to hunt some prey. वो लोग कोई द चाइल्ड सोचता है एक कासल के बारे में, एक किला के बारे में, जहाँ पे ड्रैगन घूमता रहता है, वे प्राउलिंग मतलब धीरे से चुपके से, ताकि कोई वो लोग शिकार को पकड़ सके। और गार्डन्स वेयर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड। देयर आर गार्डन्स वेयर मैजिक फ्रूट्स, जो जादुई फल वहाँ पे मिलता है बगान में। फेयरी लेडीज प्रेजेंट इन अ टावर। दिस आर ऑल स्टोरीज फ्रॉम फेयरी टेल्स। जो परी कथाएँ होते हैं ना, वहाँ पे हमेशा ऐसा होता है कि सुंदर सुंदर लेडियों को इम्प्रिजन करके, मतलब बंदी बना के रखा जाता है टावर में। सो द चाइल्ड थिंक्स about the such type of castle where the fair ladies are imprisoned or captivated. Prisoned means captivated, बंदी बनाया जाता है। or lost in an enchanted bower, या नहीं तो enchanted bower is a magical pleasant shady place among trees। सुंदर सा एक तो ब्यूटीफुल जगह जहाँ पे लोग खो जाते हैं। while gallant horsemen ride by streams। gallant means brave, bold। bold horsemen ride by streams। streams are small rivers। छोटे छोटे नदियों के किनारे पे गैलेंट हॉर्समैन घूमते रहते हैं, घुड़सवार लोग। दैट बॉर्डर ऑल दिस लैंड ऑफ ड्रीम्स। और यही सब ड्रीम वर्ल्ड में पूरा यही घिरा रहता है। आई फाइंड सो क्लियरली इन माई हेड एट 7 when I go to bed। So these things he finds in his dream when he goes to bed at 7 o'clock in the evening। जब वो 7 बजे शाम को सोने जाता है रात को, तो उस समय ये सब चीज़ एकदम दिमाग में कितना क्लियरली दिखाई देता है। बट एट 7 when I wake again, this is the 7 of morning, he wakes up again। the magic land I seek in vain। at that time that magical land becomes futile। वहाँ पे मैंने खो जाता है, कहीं उसका कोई अता पता नहीं रहता है सुबह के समय। A chair stands where the castle frowned। castle frowned, frowning means to make a gesture of eyebrows to show annoyance। that means भौवें टेढ़ा करना, गुस्से में आके जब भौवें टेढ़ा करते हैं ना लोग, उसी को फ्राउनिंग कहा जाता है इंग्लिश में। तो जहाँ पे कासल फ्राउन करता था, क्यों फ्राउन करता था? द कासल्स आर वेरी बिग एंड वेरी हॉरिफाइंग। माने कासल जो होता था डर दिखाता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ना, और वो वहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब लोग रहते हैं, तो इसीलिए वो डरावना होता है। तो इसीलिए कासल फ्राउन। अ चेयर स्टैंड्स, तो उस जहाँ पे वो रात के समय कैसल फ्राउन करता था, वहाँ पे अभी एक तो सिर्फ चेयर खड़ा है। द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड। और जहाँ पे वहाँ गार्डन ग्राउंड था, देर इज कारपेट्स, कारपेट, उस जगह को कारपेट ने अभी छिपा लिया है। नो फेयरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर। अभी कोई फेयरी यहाँ पे डांस नहीं कर रही है। दे आर नॉट डांसिंग हियर एनी मोर। बूट्स एंड नॉट हॉर्समैन फ्लैंक द डोर। एंड
in the castle there are horsemen who watches the door, because they are from the enemies. They protect the castle from enemies, and so they watch the door of the castle gates. एंड यहाँ पे क्या है कि सुबह के समय वहाँ पे सिर्फ दो बूट पड़ा रहता है, पेयर ऑफ बूट्स रखा रहता है हॉर्समैन के जगह. एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम्स रिपलिंग डैन, और यहाँ वहाँ पे क्या होता था रात में, ब्लू स्ट्रीम्स नील नदियाँ बहती थी, रिपलिंग रैन दैट मीन्स लहर भरा हुआ नदी वहाँ पे बहती थी. लेकिन now a bath and water can. There are only bath and water can now. There is no river or stream rippling here now. I seek the magic land in vain at 7 when I wake again. And मैं ढूंढता रहता हूँ इन वेन इज अ फ्रेजल वर्ड विच मीन्स फ्यूटाइल, जिसका कोई मतलब नहीं है. तो अभी वो बच्चा जो है वो मैजिक लैंड को ढूंढता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है. किस समय, एट 7 व्हेन आई वेक अगेन. हियर द लाइन हैज़ बीन रिपीटेड टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट द मैजिकल लैंड हैज़ गॉन in the morning. Here there is also a repetition of the first line, at 7 when I go to bed, which denotes that it is the time of evening, and again at 7 when I go to bed in the end of the stanza. I find so clearly in my head at 7 when I go to bed. It is emphasizing the fact that it is the time of night. And again here there is a repetition at 7 when I wake again, when he wakes up. So there are two kinds of reality or two kinds of worlds in the life of that little child. One is of imagination and one is of reality. So this is the line by line explanation of the poem. Students, if you want to ask anything, then you can ask it in the comment section. Thank you for watching.